Welcome all of you students in this new video. In this video, I'm going to discuss about remaining blocks. So we have discussed up till sound block. Now next block is pen block. So in pen block, we have following pen stacks. So first is clear block. So clear basically is used to remove the all pen marks on the screen. Suppose you have written something on the screen and you want it to remove, then you will be using this particular clear. Now moving to next block, and next block is your stamp. Stamp is used to draw the image of the sprite on the screen. Now next is pen down. So pen down, as the name suggests, is used to put the sprite's pen down, and whereas pen up is just opposite of the pen down. It is used to lift the sprite pens up. Now moving further, set pen color to. Again, pen ka color just be suppose you want to change the color of the pen to green or red, so you can use this particular set pen color, and यहाँ पे जो आपका bracket है उसमें आपको देना होगा color name. Suppose you want it to red, so you need to type red here in the brackets. Now change pen color by. So here you have to enter the amount by which you want to change the pen color. Okay. Now next is set pen color to. Now in this particular command you need to enter some number here. Actually in Scratch basically colors are also represented by certain numbers. Suppose number 1 is for red color. इस टाइप के आपके कुछ नंबर होते हैं जो किसी न किसी कलर से एसोसिएटेड होते हैं. सो यू कैन ऑल्सो चेंज द पेन कलर बाय यूजिंग एंटरिंग द गिवन नंबर्स. Next is change pen shade. Okay, so you can also change the shade of the pen by using this particular command. Now moving to the next command, that is set pen shade to. and यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, using this command you can select any given shade for your pen. Now moving again, change pen size. It changes the size of the pen by a certain given amount. You can change the thickness. Okay. Now next is set pen size to. So by using this you can set the pen size to a required value. Now next block is control block. So control block are one of the most important blocks because they control the movement of the sprite, or everything that is done in your program. These are controlled by this particular control block. So control block में basically क्या होता है, Scratch has following control stack blocks: wait until. Now वेट में क्या रहेगा, आपको यू नीड टू इनपुट अ नंबर एयर. सपोज मैंने 5 सेकेंड्स के लिए बोला, सो आई विल एंटर 5 सेकेंड इन द ब्रैकेट. सो एज सुन एज दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, जो भी आपका स्प्राइट होगा या जो भी वर्क होगा, ऑल द वर्क और एक्शंस विल बी पॉज्ड फॉर 5 सेकेंड, एंड आफ्टर 5 सेकेंड you can play the work. Okay. Now moving वेट अंटिल. सो वेट अंटिल में क्या होता है, आपको एक कंडीशन दी जाएगी. यू कैन गिव अ कंडीशन. जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक जो भी आपने टास्क करा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट. सपोज आई हैव रिटन दिस कमांड, वेट अंटिल. लास्ट मैंने लिख दिया
1 प्रेस कर दिया, या बेसिकली मैंने यहाँ पे की 1 भी लिख सकता हूँ, की 1 इज़ प्रेस्ड, सो यू विल वेट कोई भी एक्शन, सपोज इसके बाद आप चाहते हैं मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे आई कैन राइट फॉर दिस, सो मूव फॉरवर्ड यहाँ पे मैं लिख दूँगा, फॉरवर्ड के लिए मैं एरो इस तरह से बना रहा हूँ, मूव फॉरवर्ड। सो अंटिल की 1 इज़ प्रेस्ड, ये जो स्प्राइट होगी वो फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। Again, suppose you have to use this particular command, then you need you can write following code: wait until, I'm just repeating, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया की 1 और एंड लास्ट में मैंने लिख दिया मूव 10 स्टेप्स, इस टाइप से मैंने कुछ लिख दिया। सो अब होगा क्या कि जब तक की 1 नहीं प्रेस होगी तब तक जो स्प्राइट जिसके लिए द स्प्राइट फॉर विच वी प्रोग्रामिंग ऑल दीज थिंग्स विल नॉट मूव 10 स्टेप्स। नाउ नेक्स्ट इज रिपीट। So repeat, as the name suggests, suppose you want a process to repeat again and again, then you will use repeat loop. एंड रिपीट में बेसिकली क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता रहता है। नाउ मूविंग अहेड, फॉर एवर बेसिकली अ फॉर एवर लूप दैट विल नेवर एंड। ये लूप ऐसा होता है, इट विल नेवर एंड, it will keep executing. I think all of you have used forever in your Scratch Junior, so there should be no doubts about the forever loop. Now अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारी कंडीशनल, बेसिकली देयर आर सम कंडीशंस, जब वो कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। Now let's see how this happens. Suppose I have written if then, फर्स्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इफ़ देर इज़ अ ब्रैकेट then लिख रहा हूँ मैं, एंड इफ़ के अंदर मैंने एक वैल्यू i इनपुट कर दी। इफ़ i, सो मीन्स जब हम i की प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा, सपोज मैंने मूव लिख दिया है, मूव 10 स्टेप्स, सो जो हमारा प्रोग्राम लूप आएगा फर्स्ट इट विल चेक द कंडीशन। इफ़ अगर जो हमने इस की को एंटर किया है then this command will be executed, or if we had entered some other value I के अलावा, suppose I have entered O or something else, then this particular block will not be executed. Now moving ahead, next is if then else। next जो है हमारा if then else। okay, let's see how this works. Suppose I have written if then, यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, फिर मैं यहाँ पे वैल्यू i दे रहा हूँ। if then, इसके बाद मैंने लिख दिया move, फिर मैंने else लिख दिया, else hop, hop में लिख रहा हूँ। सो अब यहाँ से क्या होगा, जो कंट्रोल आएगा पहले, फर्स्ट इट विल रन थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसमें लिखा हुआ है इफ़ आई, अगर जो आई हमारा आता है देन मूव, अगर जो आई आपने प्रेस करी है देन स्प्राइट विल मूव, और एल्स में लिखा हुआ है हॉप, अगर जो आई नहीं आया, आई के अलावा सपोज यू हैव एंटर्ड सम वैल्यू ओ और ए, सो इस केस में जो एल्स वाला हो जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगेन आई एम अगेन explaining the same। if you will enter some value here I, then so अगर जो हमने I एंटर करा then ये क्या करेगा, मूव करेगा। else के अंदर मैं हॉप लिख रहा हूँ, HOP, so this sprite will hop around। so if I have entered I, then this particular block will be executed and ये हमारे लिए useless हो जाएगा। if I have entered O, then this particular block, else वाला block execute होगा, and else के अंदर क्या लिखा है, hop, so that sprite will hop around। next is repeat until। so repeat until ये वर्क, ये एग्जीक्यूट तब तक होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ओके, सो until
until the condition becomes true, this loop will be, as soon as the condition becomes true, this loop will be stopped. Now moving ahead, stop script. So it is used to stop a particular script. Now next is use of forever. So forever, I think you have I have discussed multiple times about the forever loop. So forever loop basically क्या होता है कि एक task को if you want to repeat that task for infinite period of time, you can use this particular forever loop. Now next thing is forever if. So forever if जो आप ब्लॉक यूज़ करते हैं, इट लुक्स लाइक समथिंग दिस, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है फॉरएवर इफ का. In your Scratch Junior, I think this forever if loop is not given, only forever is given. Now so forever if basically a conditional infinite loop. If a condition is satisfied, then particular the blocks given inside this particular forever if will execute, otherwise not. Let's see what happens, how it can be used. So forever if, you can see that यहाँ पे लिखा हुआ है, okay, I will consider this particular thing, or rather I will discuss the first one. So you can see that in the first at the top forever लिखा है, then if लिखा है, then last में फिर हमारा then लिखा हुआ है. So let's see how it can be used. So forever, इसके अंदर आपको कुछ कंडीशन दी होगी. सो दिस कंडीशन विल बी चेक्ड हियर. फॉरएवर इफ, यहाँ पे सॉरी, फॉरएवर इफ दिस कंडीशन गिवन इन दिस पर्टिकुलर ब्रेक, this condition will be checked, and finally if this condition is true, then this particular यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा, ये जो आपका ग्रे कलर का एरिया दिया है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा, that particular code will be executed. If this condition is found to be false, then this area will be left as it is. Okay, so similarly these forever blocks, forever if blocks can also be used. So I hope all the things are clear. With this I am closing this video, and since we have finished the syllabus for the first unit test, so from the next class we will have a revision work. So thank you very much.